संसद विधानसभा में वोट के लिए रिश्वत लेने का ये मामला, अब इस पर फैसला आ चुका है। स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 7 जजों के संविधान पीठ का ये फैसला है कि सांसदों विधायकों को कानून से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। सांसदों और विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा अब चलाया जा सकता है। आपको बता दें 1998 के पी नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला किया था, लेकिन अब 25 साल बाद यह फैसला पलट चुका है। कानून के कटघरे में खड़े होंगे अब नोट के बदले सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायक। केंद्र ने भी ऐसी किसी भी छूट का विरोध किया था। आपको बता दें कि ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। 25 साल के बाद संसद या विधानसभा में खास तरह का भाषण देने या वोट डालने के बाद अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेते हैं तो उस पर अब मुकदमा चल सकेगा। चलिए आपको सुनवाते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। Conferring parliamentary privileges on members of the legislature. Finally, before concluding, we hold that elections to the Rajya Sabha fall within the remit of Article 194(2). We hold, distinct from the marginal note, in the text of the provision, there is a conscious use of the term legislature instead of the House of Legislature at appropriate places. It is evident from the drafting of the provision that the two terms have not been used interchangeably. The first limb of Article 194(2) pertains to anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof. However, in the second limb, the phrase used is in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, paper, votes or proceedings. There is a clear departure from the term legislature, which is used in the first limb, to use the term house of such legislature in the second limb of the provision. It is clear, therefore, that the provision creates a distinction between the legislature as a whole in the first limb and the house of the same legislature in the second limb. The elections to the Rajya Sabha conducted under Article 80, as referred to above, may also take place when the House is not in session, as seats may fall vacant when the Legislative Assembly of the state is not in session. However, the elections remain a part of the functioning of the legislature and take place within the presence of the Legislative Assembly. Similarly, the elections for the President of India under Article 54 and for the Vice President under Article 66 may also take place in Parliament or the state legislative assemblies when they are not in session. However, they are an integral part of the powers and responsibilities of elected members of the Parliament and the state legislative assemblies. The vote for such elections is given in the legislature or Parliament, which is sufficient to invoke the protection of the first limb of Articles 1052 and 194(2). Such processes are significant to the functioning of the legislature and in the broader structure of parliamentary democracy. There appears to be no restriction, either in the text of Article 1052 or Article 194(2), which pushes such elections outside of the protection provided by the provisions. Further, the purpose of parliamentary privilege to provide legislatures with a platform to speak and vote without fear is equally applicable to elections to the Rajya Sabha and elections for the President and the Vice President as well. So we have overruled the judgment in P.V. Narsimha Rao. तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लगभग 25 साल के बाद अब ये फैसला पलटा है। कानून के कटघरे में अब नोट के बदले सदन में वोट लेने वाले सांसद और विधायक खड़े होंगे। आपको बता दें कि केंद्र ने भी ऐसी किसी भी छूट का विरोध किया था और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये फैसला पलट दिया है। आपको बता दें 1998 के पी नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला लिया था। उस वक्त उन्हें छूट दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामलों पर भी फर्क पड़ेगा।